मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम ना, इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम, मेरी जान भला इस तरह मुझे क्यों सताते हो तुम। तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा, लौट आऊंगा मैं दुनिया से तुझे। मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम ना, इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। Hi guys. Okay, so प्रणव कुमार जी KRK को बेल मिल गया। ओके ओके, अभी सेलिब्रिटी KRK बन गया हमारे लाइफ में। सीरियसली अभी बैंड बजाएंगे क्या लास्ट 24 आवर्स के? लेट्स सी। थैंक यू सर प्रणव कुमार जी फॉर दैट इंफॉर्मेशन। प्रीति, welcome ma'am. Here is the StreamYard link. Please, if you are available, please, you guys are welcome to join. Anybody, Preeti. आज तो दिल तमन्ना थामना ही पड़ेगा। पूरी अप एंड डाउन वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ा ऊपर थोड़ा ओके प्रीति, आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक मैम, दैट्स ऑल आई कैन से। अनुज जी सर वेलकम। Akanksha, welcome. Thank you for being here, guys. Anuji, okay. Ayush, thank you. Hima Nadi Minty. Okay. What nonsense. Okay, so let's see. Justice for SSR, Leena Sukhdev. Thank you. Sunil Shetty के गले में अंगूठी। गणपति पप्पा मोरिया, थैंक यू। जस्टिस तो मिलेगा ही सुशांत को। नीता जयेश्वर जी, थैंक यू सो मच मैम। यस इंडीड, हम छीन के लेंगे 302। ओके, सो लेट्स डू दिस। बहुत कुछ कंटेंट है, कुछ अंकल्स का, कुछ आंटीज का, बहुत कुछ चल रहा है। बट एक अंकल के बारे में आई हैव टू मेंशन बिफोर आई फॉरगेट, बिकॉज पल्लवी वाघमर जी, थैंक यू मैम। हेलो, लिंक तो दो यार, लिंक ऊपर पोस्ट किया ना, एक सेकंड फिर से करेंगे। ओके सो साक्षी कामत, बॉयकॉट बॉलीवुड फॉर एवर। ओके, एब्सोल्युटली, थैंक यू साक्षी जी, वेलकम मैम फ्रॉम फेसबुक। ओके, सो हियर आयुष, वेलकम सर, हाउ आर यू? Fine. Okay, very nice. You can You don't wanna. just you can also keep commenting whatever you think of once in a while. Just I just want to once in a while play some videos and we can keep talking. MS Rawat ji, welcome sir. Preeti, welcome ma'am. वेलकम जी। आज का तो पोस्टर ही इतना अट्रैक्टिव था कि आई कांट वेट। तुमने तो आधा कंटेंट आपसे पहले मैं स्टार्ट कर देती। तुमने तो आधा कंटेंट दे दिया यार, तो तुमको तो पूरा एग्जाम्स में 50% मार्क्स तो गारंटीड है। देखो लेबर डे पे मैंने कितना काम किया, फुल लेबर वर्क। थोड़ा आराम भी कर लेते। नहीं, आराम तो कर नहीं सकते ना इस वक्त, तो इट्स अ मेन टाइम टू वर्क। एग्जैक्टली। सो बात क्या सीन है एपिसोड में दोनों का, और सबको स्वागत है, वेलकम। सो यहाँ पे दो पॉलिटिक्स करके देयर इज दिस चैनल व्हिच आई यूज्ड टू वॉच बट नॉट एनीमोर अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दिस Mahashay has started talking some bullshit, so we need to address that. I just wanted to talk about this before we forget, before we get to the juicier parts of the conversation here. इसका एपिसोड बहुत ही अच्छा चल रहा था, where he was पूरा बॉलीवुड की ऐसी की तैसी कर रहा था, and suddenly इसमें क्या घुस गया मालूम नहीं है, suddenly he says this.
Don't tell me audio record नहीं हुआ. No. Depression is real. Oh, there you go. Thank you. You know what? Depression is real. Yes, it is. शायद चेस्टर बेनिंगटन को था, शायद रॉबिन विलियम्स को भी और सुशांत सिंह राजपूत को भी. पर So he is a very good commentator. Unfortunately, इसका तो इधर बिक गया कि क्या हो गया मालूम नहीं है, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं है. But suddenly he is talking some bullshit like this. So फिर से देखते हैं एक बार. is real. Yes, it is. शायद चेस्टर बेनिंगटन को था, शायद रॉबिन विलियम्स को भी और सुशांत सिंह राजपूत को भी, पर उन्होंने कभी इस पर साक्षात्कार नहीं दी, या यूं कहें कि शायद बताना तो चाहा, पर उस बताने के दौरान उसकी दुकान नहीं डालनी चाहिए. चलिए जाने दीजिए. चलिए जाने दीजिए तो नहीं होगा भाई साहब. You have to give an explanation of why you said that Sushant Singh Rajput was depressed, and if you have any proof. So this is not going to cut it. अच्छा पोस्टर ने दिल दी. अनुज जी स्पेशली आपके लिए ही बनाया है उस पोस्टर को, बिकॉज वाह क्या सीन है. तो okay, Ms. Rao ji, thank you ma'am, thank you sir. This person roast very hilarious. Yes, Pooja ji, actually he has really good content until he unfortunately lost a subscriber in me, because I cannot deal with this kind of narrative, especially those who have like millions and millions of followers. If they are talking some bullshit and throwing shade and suspicion on the murder of Sushant Singh Rajput, we cannot just accept it. So Alvino Fernandez ji, welcome sir from Facebook. Let's see, MS Rawat ji, he himself seems to be in depression. Thank you Alvino ji. Yes Sushant, we miss you. Okay, so ye ho gaya. Let's go back to the main content of the day. आजकल अंकल सबके पांव पड़ रहे हैं, as you can see. So Preeti and Ayush, please, you are welcome to say something. पिता खरीद ली चांद पर जमीन, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने. ओके यार कोई किसी somebody has to read it fast यार अभी, वरना पूरा टाइम शो टाइम यही पे चला जाएगा. ओके सो नहीं तो बॉलीवुड लैंग्वेज में उनको रोस्ट कर देंगे. ओके सुशांत बोल रहे थे. आई डोंट नो यार, लग नहीं रहा है पूजा जी. I think he was genuine when he is trying to say कि he wants to peddle the depression narrative. I don't know. I just felt like this was not going to be good. इसको पैसे बहुत मिले होंगे झूठ बोलने के लिए. I know. Love from USA, originally from Goa. Okay, very nice sir. Alvino ji, welcome. Thank you once again. Okay, so here आजकल अंकल बहुत सारा साउथ इंडिया जाके सबके पाव पड़ रहे हैं. As you can see, why he must be doing this. इनका ब्रह्मास्त्र चलने वाला है कि नहीं चलने वाले हैं देखते हैं. But let me just go over content one by one. Okay, so ब्रह्मास्त्र के बारे में एक मीम है, एक बार देख लेते हैं. सो ये लग रहा है कि साउथ इंडियन हाउस वार्मिंग लग रहा है. अंकल जी बहुत ही मतलब अच्छे से. लेट्स सी. खुद का ब्रह्मास्त्र उस पे ही गिर गया. तो यही होने वाला है इट सीम्स रणबीर के साथ भी. हम सब ऐसे सब स्टेट्स में एक ही. असली ब्रह्मास्त्र ऐसे सालियंस कर रहे हैं पिक्चरों को बॉयकॉट करके. Exactly. Yeah. So absolutely, I love the idea, ma'am. Sakshi ji, हमारा यहाँ पे so when Varun came here few months ago, we tried to see how many people are there in Atlanta who are SSRians. Ikka dukki, I knew like one or two people who were there, but you know, either it was
we were not able to get together that time. Some people were not responsive because they were not available or something. So all kinds of things happened, and literally Varun and I were the only ones who were able to meet in Atlanta when he came over here. So of course Colonel Rohit Dev was here, and we were able to meet him too. And we have Dekhe Kapurji, who is also he also runs an alternative media kind of platform. So Atlanta mein getting foot traffic and trying to gather people on this basis has not been, for the past 2 years I feel like I'm the only one here in Atlanta, but we have numbers in India, and I think your idea is very good. एक ही वीक में रास्ता जाम करके सुशांत जस्टिस के लिए we can demand. I think that's an amazing idea, Sakshi ji. Mamas is going to be a big flop, no doubt about that. Okay. Thank you, Arna ji. Thank you so much, ma'am. I missed you too. Thank you so much. This video belongs to Ajit Bharti channel, and Ajit Bharti never supports Bollywood. Okay. Pooja ji, I hope that is true, and this sentence, they will have to address this at some point, because Sushant was not depressed. So, and his Instagram posts don't look like he's depressed. So, okay. So क्या क्या चल रहा है नया ताजा? Let's see. I just didn't want to only talk about ब्रह्मास्त्र यार, because इतना overdose हो गया मेरे life में. I'm just like sick and tired of that movie, and just quickly चलो जल्दी से release कर दो, हमको जो काम करना है कर देंगे, because वो 10 साल से चल ही रहा है उसका ड्रामा. So यहाँ पे उर्फी दीदी आती है. I'll just show you what she's going over, doing some kind of crap as always. Okay. Yeah, where is the, yeah, so let's see, just to show you. Okay, so what kind of content people are generating these days? Let's just look. And Urfi, because she wore this kind of dress, it seems people are trolling her. Oh yaar, ye nahi hai. Ek second. Where is the, okay, this is not the one that I wanted. Okay, but you know what? Let me just share this. There is another video also, I'll show you. सेक्स? तुम आम का अचार समझ बैठे हो क्या सेक्स को? मम्मी तो सुखाती हूँ, पर वो सेक्स वेक्स नहीं है बेटा. जाओ जाके सच का थोड़ा रिप्रोडक्शन वो पढ़ो यार. मैं 2 नेकेड रहूं, 3 नेकेड रहूं, तेरे बाप की चड्डी पहन रही हूँ, अपनी चड्डी. So she's doing a live, I believe, I don't know if Facebook live है कि Instagram live है, and वहाँ पे she's saying कि ask me a question, ask me anything करके people keep doing sessions, right? तो उसमें it seems, why are you too naked on social media? That is a question a viewer has asked. Viewer या fan पता नहीं है कौन है, but then she says कि तेरा बाप का चड्डी पहना है क्या? Why do you care whether I am naked or not? That is her response. 1 second, फिर से सुन लेते हैं दीदी का talented response. वो सेक्स वेक्स नहीं है बेटा. जाओ जाके सच का थोड़ा रिप्रोडक्शन वो पढ़ो यार. मैं 2 नेकेड रहूं, 3 नेकेड रहूं, तेरे बाप की चड्डी पहन रही हूँ, अपनी चड्डी, अपने कच्चा, अपना सब कुछ है. तुम्हारा क्या जा रहा है? ऊंचे से ऊंचा बंदा पॉटी पे बैठने नंगा, फिर साली काएगी सोसाइटी है. So obviously Deepika Padukone is her, she's quoting her lyrics, right? So she's probably, oh my god, there are some other questions also which I cannot say. Okay, let's do this. Okay, so she is the lady who went to some kind of award show or something like that, and literally dress, this has been made in less than 3 minutes. I think she can go into the Guinness Book of World Records for creating such a beautiful ड्रेस, बिकॉज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. बस जो भी आपके प्रीति या आयुष, व्हाट इज कर्टन कॉल्ड इन हिंदी? पर्दे. थैंक यू. सो पर्दे जो भी रहते हैं वो बस, प्रीति बोलो यार. मेरे पास शब्द नहीं थे इस फोटो पिक्चर के बाद. पर्दे फाड़ के, जिसने इसको ऐसे कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया, पहले उससे पूछा जाए कि साले तेरे अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो तूने ऐसे कपड़े बनाए. नहीं आयुष, उसने उसका आंसर भी किया है इसमें. नहीं, she actually wears it herself. रणवीर सिंह जब नंगा घूम सकता है तो मुझे क्यों बोलते तुम लोग?
Okay, actually, I'll just take out the Instagram video. Viral biryani ka, I don't want to give him a whole lot of footage, but तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो। मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। One more comment from any one of you and मैं आज के बाद फिर I'll not. I give you guys so much respect and if this is what I'm getting back, please. जब मैं झलक पे आई थी, कोई एक बंदा तुम so she's come. Wait a second. I just don't want to miss any comments. Fijavadi dress काफी अच्छी. I know. What an upstart minimalist. Exactly. Minimal कपड़े पहनो. You mean curtain का कपड़ा अनुज? Exactly. Cheap disrespect. मैं नहीं बताऊंगा. समझ लीजिए आप. Less is more. Okay. So she is actually bhadkofai on the cameraman and the paparazzi because it seems they are being disrespectful. The point is, आप खुद पे disrespectful हो ना. ऐसा नहीं है कि we are being disrespectful before you are being disrespectful to yourself. So it's just yeah. Please. So Ayush actually कपड़े खुद उसकी she actually makes her own clothes. तो जो भी she actually posts before and after photos also. तो पहनते पहनते सिला she keeps stitching it onto her body. That is her खासियत. So she can only blame herself. ये फेक एटीट्यूड दिखाते खुद चाहती है कि लोग कमेंट करें. Exactly. खुद ही कपड़े फालतू पहन के एयरपोर्ट पे गली कूचे में घूमती रहती है और इतना एटीट्यूड है जैसे पता नहीं क्या एक्टर है. I know. इसलिए बोलते बोलते रुक गई. अगर किसी ने भी कमेंट किया ना तो देख लेना. फिर भूल गई कि अच्छा मैं ही तो हूँ. कल आएंगे भी नहीं पिक्चर लेना. Exactly. अपने आप ही. Exactly. So यार तुमको I'll just keep showing you some really cringy content as well as some really inspiring content. Like this is not the inspiring content I'm talking about. But sorry, I did not because ब्रह्मास्त्र से मेरा सर इतना पक गया था ना कि I did not put them into folders this time. Okay, so but I just want to show you aunties. उर्फी जावेद से भी मतलब इतना talented aunties निकल रहे हैं आजकल घर में बैठ के सेलफोन से. This is what they're doing. एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू नहीं जानता. एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम जानते हैं. एक चुटकी सिंदूर की कीमत झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चे संभालना और राजकुमारी से काम वाली बाई बना देता है. एक चुटकी सिंदूर. बाप रे क्या वो फेमिनिज्म है यार. अमेजिंग. सीरियस किटी पार्टी गैंग. डेस्परेट आंटीज. एक चुटकी खुद के बेइज्जती करो मतलब सेलफोन लेके. Just feeling sorry. This is the kind of idea they have. मजाक बन के रह गई है आजकल. Everything is a joke. Exactly. और पति को भी धोना. और इनको देख के जरा भी लगता है इनमें से कोई भी झाड़ू पोछा करता होगा. I know. ये जो इतना ड्रामा करके कर रही हैं. And just so what is wrong in taking care of your house? What is wrong in like of course there are people who are under severe distress and all that. We are not talking about those kind of people, right? But sharing duties and sharing the responsibility of the household work and everything. You cannot just जो भी actually women who are housewives and everything and who have to do this. So you are making fun of those people as well. मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे. एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू नहीं जानता. एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम जानते हैं. एक चुटकी सिंदूर की कीमत झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चे संभालना और राजकुमारी से काम वाली बाई बना देता है. एक चुटकी सिंदूर. इंस्टाग्राम रील का कमाल है. Exactly. इनमें से कौन लग रही है पीछे से लेके आगे तक जो काम वाली बाई है. आप लुक एट हर बिहेवियर. करती है एक गिलास नहीं उठाते होंगे अपने घर में लेकिन एटीट्यूड ड्रामा करते हैं ना.
4 घंटे पार्लर में बिताने वालों का ऐसे ही हाल होता है। हाँ, इतना मतलब इतना वाहियात जो कि मतलब ये जैसे कितना ये मर रही है काम में, कुछ भी। फेसबुक पे ब्यूटी पार्लर का नाम था चेहरा चमकाने का गैराज। ये सब टिकटॉक की बर्बादी है सारी। सबने अब एक्टर ही बनना है बस आगे। ये तो खुद की जिम्मेदारी उठा ले, बहुत है बदी और घर की तो उठाया है इनकी क्या। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ, चलो। बेटे के पहले यार तू पढ़ ले। मैं पढ़ूं? बेटे के पहले जन्मदिन पर पिता ने खरीद ली चांद पर जमीन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी प्रेरणा, जिसमें उसकी जमीन का नक्शा भी मिला है। करीब 2 करोड़ ये जमीन, 2 एकड़ यह जमीन, सॉरी 2 एकड़ का यह जमीन। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर शिवम जी। मुझे तो लगता है ये सब प्रोपेगेंडिस्ट है। दिस लॉट ऑफ वोकनेस अनुज जी, बहुत मतलब 10 साल से चल ही रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया में। जस्ट बिकॉज यू हैव अ वॉइस, यू कैन यूज योर वॉइस टू change the narrative and try to be cool and everything, and think that this is how you are cool as a modern woman. So it's just बाल्टी के पीछे क्या, हाँ क्या है, ज्यादा पहुंचा है। बाल्टी के पीछे क्या है? हाँ, बाल्टी के पीछे क्या है? के पीछे कायदा है क्या? ज्यादा पोछा है। I pride myself on a well-kept house. Same here, Arna ji. I take care of my house and I'm very proud of it. RNS, you and Dubai bhai need Hindi class. पूजा जी, हम यहाँ पे बॉलीवुड की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरों की बेइज्जती, खुद की नहीं। ओके, सो लेट्स डू दिस। एक सेकंड यार, तुम आई थॉट कि पूजा जी 1 साल से कर रहे हैं ये एपिसोड, मेरा थोड़ा हिंदी इंप्रूव नहीं हो गया क्या? ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अंकल और चीपिका दीदी, एक चुटकी सिंदूर चीपिका दीदी। Her influence is not only on woke feminists, her influence is also on men. एक बार देख लेते हैं। I don't have to explain this. I think it is so nasty and sad, but I just have to play because अभी ब्रह्मास्त्र का बजा रहे हैं। So ये बिकनी अपनी टिकनी तेरा मेरा हाथ जगन्नाथ। ये बिकनी अपनी टिकनी। It seems word play. They are playing word play. Okay, Didi is teaching him. ये बिकनी अपनी टिकनी तेरा मेरा हाथ जगन्नाथ। बेइज्जती का। I know, पूजा जी, I'm trying. Trust me. आपके कान खून से ये हो जाएंगे, but I'm going to try to do बेइज्जती of Bollywood. Okay? आयुष, yeah, please. हिंदुओं पे हंसते हैं लोग, शर्म नहीं आती इन लोग को? जगन्नाथ कौन है इनको पता भी है? पुरी में यात्रा निकलती है, रथ यात्रा। It is something that even the Britishers who saw it were just amazed. अभी जगरनॉट करके, how do we know that जगरनॉट? The word itself, we talked about this a few months ago. Juggernaut, the word juggernaut in English was coined after Jagannath, because it is something, a huge, powerful, overwhelming force or institution. That is the kind of God we are talking about. Guys, I'm not coming for this. Please. तुम्हें अगर कपड़ों पे कमेंट, एक सेकंड, सॉरी यार, दिस ऑडियो इज वे टू मच, बट ओके, ये हो गया दीदी का, हटाओ उसको, हटाओ। ओके, सो लेट्स गो टू
ओ ये दीदी के साथ ये बात। नहीं है यार, कुछ नहीं, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है यार। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, चौथ के बच्चे इतने कांड फटी के ये बड़वे। सो पूजा जी, मेरे को याद आ गया ये दीदी जिसके सहारे से आई एम ट्राइंग टू डू बेइज्जती, बिकॉज इसका तो बॉलीवुड बिल्ली का गू है ना लिपने का। ओ यार, ये पूजा जी जबरदस्ती मेरे को टेस्ट, शी इज गिविंग मी अ हिंदी एग्जाम टुडे। ओके, सो जिसको भी समझ में आया ये कैप्शन हंस लो यार। Okay, I'm just kidding. Okay, so let's go to the next episode here. 1 second. Okay. So this is Samira Reddy, I think. Amira Reddy, pregnancy yeah. photo shoot. Yep. Yeah, exactly. So Samira Reddy ka, I think this is second child or third child or fourth child, I don't know. But Didi is like, everybody is doing a pregnancy shoot. I will do something unique and I'll do a pregnancy shoot in water. It's not giving me any kind of वो जो vibe ये it's not it's not giving me any kind of great vibes. It's just making me feel sad ये लड़की को ऐसे देख के। I just hope कि ये enjoy कर रही है ऐसे फोटो शूट करना, मतलब See, किसको it's दिखाने okay के to लिए। enjoy all these kind of photo shoot, doesn't matter, but that's your personal things. You cannot put it on a social media कि उसको प्लेट की तरह आप सर्व कर रहे हो दुनिया में। आप अपने पर्सनल पिक्चर्स हैं, अपने पर्सनल मेमोरीज के लिए रखो ना, किसने मना किया? We have lot of pictures, we don't show it to everyone. रखो अपने पास में, I don't mind doing that, but that doesn't mean you can promote and bring motivation to ladies to do something like this. That is the problem here. So okay, so यहाँ पे करीना दीदी के तो anytime there is a chance to bajafy her, I won't leave that opportunity. तो यहाँ पे एक मीम डाला है भाई साहब ने, मजा किया पप्पू, it seems. Okay, so उन्होंने डाला कि करीना कपूर से her character गीत in जब भी met increased Indian Railways का revenue. So her dance in this song Fevicol also increased Fevicol's revenue too. So that is the meme. So I don't know why Didi is not talking about her Fevicol वाली वो movie के बारे में. But as you can see, this is the kind of clothes we started seeing social media 2007, 2008, 9 से बहुत ज़्यादा it started picking up and everything. तब से we have seen trends. So I also there is an anthropologist called Jeannie Twenge, and वो बताती है हमको कि कैसे we have become a narcissistic generation. Like selfies post करो, खुद के photos post करो, take 400 photos but only post one best shot, right? खुद का. So this is the kind of content that we started seeing in 2009 when Kim Kardashian in America started doing falafying raita all over the place. And Kim Kardashian ka, please don't search for it, but she released her own sex tape because of which she is famous. That is literally her own talent. Of course, there are other talents as you can see on screen here. Pregnancy is a source of limelight. Exactly. Matlab, such a natural process and something that is so amazing. They're just making it. Her Chameli movie also increased revenues. Totally agree, Anuj ji. Fevicol से चिपका तभी तो चमेली चली. फेविकोल का मजबूत जोड़, चमेली का दुगना, चमेली का नाम हो गया दुगना. And as you can see, these kind of pictures, if you see, we are starting to see people like Urfi Javed and all those people also trying to post some pictures. I just saw some. Okay. So this is a blast from the past. If you can see, there is a proud Sridevi fan. ठीक है, वो क्या क्या करता रहता है, I'll just show you. He says कि it seems the original
diva is Sridevi, and uski sab nakal karke they have become stars or whatever. So it seems ये original है, ये duplicate है. ठीक है, whatever it is, I think it's disgusting that they just वो midriff जो बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, if you have like 1 kilometer, if you don't have any kind of clothes on, that is supposed to be sexy, and that is the most showcased part of, unfortunately, a woman who is supposed to be, yeah. So this is the kind of narrative that we have been seeing. Uska Sridevi ka, I'll just show you one other thing. I think I have it in my Instagram. I'll just show you a saved one. Okay, so we'll go to that next. Just want to show you something that aunties have been doing from the past 2 or 3 weeks. जब से ये trend शुरू हो गया है, okay? So as you can see, this is Kala Chashma trend itself. My friend showed it to me, and so you see movies, on top of that you throw parties and you do all this. Great, which is amazing. Matlab, I just hope their kids are dying of cringe. Yeah, cool. Yeah, I've seen this personally as well. So nothing new. This is something ladies are getting पागल अगल हो गई हैं. कुछ तो झोले लोचा दिमाग में आजकल. I know. नोरा फतेही जब से आई है ना, तब से ये सब पागलें हो गई हैं. ये सब ऐसी हरकतें करती रहती हैं. Wahiyat, I know. Innocent girls are paying for this provocative behavior. Exactly. Just a lot of things, and people are readily taking advantage of all that also, Arna ji. Absolutely. Thank you, Bhavna ji. Welcome, ma'am. How are you? So, okay, ये हो गया. And again, same thing, you should have fun. Nothing wrong in it. सबकी अपने personal views होते हैं इस पे. लेकिन fun का मतलब नुमाइश करना नहीं होता है social media पे. You don't need to throw all these videos और लोगों को promote करो कि ऐसे party किया करो. अपना करो ना party. किसने मना किया है? जो करना है करो. Freaking WhatsApp, na? Matlab. But that's okay. But you don't need. The problem is the throwing these kind of videos and promoting more of these kind of faltu vulgar stuff. Exactly. Do it. I don't mind doing it, but be in your limits. It's a private party. That's it. You don't need to promote this on social media that हम लोग ये कर रहे हैं. This is how the women should enjoy. ये कोई game नहीं है यहाँ पे कि आप लोग और 10 औरतों को भड़का रही हैं बैठ के. And FOMO then everybody wants to do this, सब फिर उसमें competition में आते हैं. Exactly. अच्छा ऐसे पार्टी करते हैं, हम भी कल से लाइव वीडियो डालेंगे अपने. ये that is what I hate. Do the party, but that doesn't mean you have to like चमेली नहीं बन जाना है. And now I'm going to watch this session. Anuji. Okay, so here I just wanted to inferiority. नहीं, actually Arna ji and Preeti, I was just thinking FOMO भी आ जाएगा ना यार कि तुम you are not being invited to these kind of cool, happy, fun, awesome parties, right? And FOMO आ जाएगा. People who are looking at this are like, my life sucks. And there's no fun in my life. Look at That's all these. That's what I'm saying. कि it's all a mind game. Yeah. कुछ लोग जो नॉर्मल पार्टी भी करते होंगे ना, अब ये वीडियोस देख के they will feel कि हम लोग ऐसा फन नहीं करते. We should start doing it, and they're gonna start doing this. ये सब माइंड गेम्स हैं. बट पार्टी आपकी अपने एंजॉयमेंट के लिए है. अपने पास रखो, अपने ग्रुप के व्हाट्सएप में शिफ्ट करो, बट नॉट इन अ सोशल मीडिया लाइक दिस. ये गलत है कि ये सब इतना पब्लिकली आप ऐसा सब दिखा रहे हो. दुनिया देखती है इस पे बैठ के. क्या है ये सब? व्हाट फन इज दिस कि तुम इस तरह से नाच रही हो और दुनिया तुम्हें देख रही है और कमेंट भी कर रही है. What is this? आपके हस्बैंड्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनके ऑफिस में लोग देखते हैं, आपके ऑफिस में देखते हैं. क्या तरीका है ये? And then you talk about the culture बहू of the house. What is this? Exactly. So I just wanted to
highlight some things. Okay, so what are examples? Third-rate females are studying totally discussed, only bringing shame for their near and dear ones. Yeah, I just don't know यार, इतना कुछ बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग हो गया आजकल, मतलब सरदर्दी हो रहा है आजकल इंस्टाग्राम ओपन करते साथ ही. So if you get, okay, Rocky ji, hello sir, welcome Rocky. How are you? Hello ma'am. सॉरी, अजय देवगन की लड़की है वो? Yeah. Okay. So this is Ajay Devgan's daughter. Yeah. Rocky sir, welcome sir. How are you? Yeah, I'm doing good, ma'am. You're looking pretty as always. And मैं खुद को रोक नहीं पाया. Just saw that StreamYard link and I jumped in. No, please. The So how StreamYard are link you? is for everybody to join. So this is our combined effort will only lead to this. So I'm doing great. Every day I'm alive, walking on this earth, contributing and doing something that I love is a great day. That's how I look at it. So. Yes, ma'am. And not to forget, you're doing great. I mean, service to lesser beings also, जो हम नहीं सोच पाते थे. और thank you for bringing up these woke aunties into the picture, into the frame, because a bigger section of people actually hesitate to speak about them. Because अभी हमको लेबल लग जाएगा ना कि you have patriarchal mindset, तुम you are an illiterate and you are from the गंवार हो, you have a background of village and you come from that thought, come from that background. So अभी क्या है, revealing clothes पहनना, अपनी वो चीजों को flaunt करना. I hope your viewers get it. जो which the things which or gestures which were supposed to be private, you make it into a public thing, and then you claim some kind of ki you are such a pious thing. I don't want to sound like a patriarchal guy, but this is how things work, ma'am. I hope you get it. No, I get it, sir. So trust me, a lot of women also share the same frustrations that men are sharing. It's think of beauty is joy forever, but यहाँ पे beauty दिख नहीं रहा है, श्लीलता दिख रहा है. That is the problem. It's like right, ma'am. And yeah, I mean, but the point I want to make here is, ma'am, I see that in the women of olden generation, कि they exactly knew how the biology worked, and ऐसा नहीं था कि they didn't know about urges or provocative things. But somehow अभी क्या है ना कि this generation I have a big problem with. They think that they have discovered this urges and attraction and things like that. तो अभी ये बॉलीवुड में भी है बहुत जोरों पे कि एक बार एक माता जी से मेरी ट्विटर पे बहस हो गई and she was asking ladies to flaunt their sexuality. So then I told, how about flaunting your intelligence, which is also allegedly given by God. So then she blocked me. So she's a part-time actor, full-time feminist. तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे, और मैं समझ गया कि where is she coming from. Somehow she's related to Bollywood. तो ये है मैम actually, and I'll tell you another instance, ma'am, since ये topic आज है. In a very subtle way, I mean, I don't know left wing or Westerners how this has got into our psyche. आप जरा पहले के ऐड देखिए, द एडवर्टीजमेंट जहाँ पे be it a detergent or be it some furniture or take it any, you name it. So उसमें क्या था कि एक connect होता था with the common masses. And grandfather is seen reading newspaper, father is doing something, mom is in the kitchen. So okay, we got it that this is how the things are, and in a normal household this is how it happens. But abhi kya hai ki some advertisement mein I mean, I don't know, there's a strange that compulsion to reverse this thing. Men are seen cooking that thing. So cooking is not actually, it's not a regressive thing. Cooking is actually a skill everybody should learn. And ma'am, I'll tell you from my generation, men particularly, it's a life skill. Right? Right. So I mean, I don't know, I could be wrong, but this is how, in a subtle way, this is being fed into very young girls today, that if you cook in the kitchen, you will be looked down upon.
और वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या किसी और मीन से ये चीज वो पुश कर रहे हैं. आई थिंक what women wanted in the, I mean, little back generation अगर हम जाएंगे तो कि they want the men to cooperate in the kitchen so that the burden is eased out. Yeah. Now actually they are pushing कि the role should be reversed and men should cook, and that's what I'm against. Yeah. It's a surviving skill, ma'am. You rightly said. Yeah, every advertisement has that specifically what you're just talking about. The narrative is being thopified ki the guys are packing lunches, the guys are cooking, the guys are taking care of the dishwasher. It's Right. great that change is there, but it was all about not giving women all the rights and suppressing all the rights of men, right? So it was striking a balance. Right, ma'am. Yeah. एक रेफ्रिजरेटर का ऐड था मैम. I saw there कि मतलब one lady is complimenting another one, and now suddenly the sari is gone out of the picture. Now sari only nowadays these advertisement people show that sari is being worn only by maids now. So secondly they're all into western clothes. So I mean that's fine, that's their choice, but if you're trying to make a point, then I have a problem here, right? Sir, Visakhapatnam. Sir, Visakhapatnam, I went to not engagement party, wedding, and I was like the only calm wali looking sari wearing lady there, and everybody else was ghagra, chudidar, salwar. मतलब I'm like ये कब से हमारा ड्रेस बन गया? मतलब at least South India में तो the rate of adopting the new thing, the in thing is just so quick now. I'm like, wow. Okay. And ma'am, this Kanjivaram silk is so elegant, ma'am. I mean, I am from North. So actually, I discovered Kanjivaram silk a decade back. So I know for every function, I insist women in my family that you should only wear Kanjivaram silk and you should put a gajra on your hair. So that's what I've been persuading, and I mean, to some extent, I'm successful, ma'am. And women look so beautiful. Even girls look so beautiful. Teenager girls, I mean. And you are actually you are supporting the cottage farm industry, which is the all those people who are killing themselves, all those farmers, the weavers, right? Who weave them with hand and everything. You are actually supporting them, but otherwise they are committing mass numbers by suicides in Andhra Pradesh, especially. They are very impoverished. They have become, right, ma'am. So this is what in the advertisement they show, and I saw in one of that refrigerator advertisement, one woman in a western dress was complimenting her friend that your cook has made this fantastic thing. So again, the cooking has to be done either by maid or by some guy in your house. I don't know which way it's going on, but this Bollywood has a big role in it. Let me say this very and so, absolutely. Thank you, ma'am, for bringing up this. Thank you, sir. Thank you. No, see, and the narrative of like holding a glass, if you go to a party and if you say that, hey, I don't drink or I don't, it's okay, but if you don't have that glass in your hand, you're not cool. If you don't smoke a cigarette, or if you're not okay with others smoking a cigarette, you are not cool. There's so many narratives being said. It's kind of irritating. I feel like somehow 100 years old. इसमें फंडा क्या है? Even Rocky ji, right? Rocky. Hello Priti ji. यहाँ पे दो चीजें हो गई. यहाँ पे इन लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग ये दूसरी तरह से समझा रहे हैं. क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि हाँ, आपके घर में जो भी लेडीज हो उनको आप अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं. कल को कभी जरूरत आ सकती है तो वो आपके साथ चल सकें, आपके यहाँ कामों में हाथ बटा सके. देयर आर सो मेनी थिंग्स वुमेन एम्पावरमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं. अपनी बातों को रख सके, अगर उसके मन में कुछ है तो उसको रखना सीखे. देयर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ वुमेन एज अ पावर. लेकिन इन लोगों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट द वे दे आर एक्सप्लेनिंग एंड शोइंग इज द वाइन, इज द किटी पार्टीज, इज द वे यू आर बिहेविंग एंड साड़ी उतार के डांस करना. दिस इज हाउ दे आर शोइंग, और लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर ये तुम नहीं कर सकते हो तो माय गॉड, तुम लोग कितने ज्यादा परेशान हो दुनिया में, तुम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है. बिल्कुल. एंड ये देखिए ना, एक पीयर प्रेशर, तो पेरेंट्स के साथ मत रहो. इन लॉज आर सो मच हाई. ओ माय गॉड, दे डोंट वांट दिस, दे डोंट वांट टू डू दिस.
ये सब उन लोग है ना धीरे धीरे माइंड क्रिएट कर रहे हैं और आपको आपके फैमिली से दूर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कीपिंग दैट वो कमिटमेंट इज टू मच, यू नो, वो इन लॉज आर हियर, ओ माय गॉड दिस इज सो टू मच। ये सब जो स्टार्ट हुआ है ना अचानक से, ये सब Very ब्रेन good वॉशिंग point. स्टार्ट हुई है। Very good point. लॉस होते हैं And see, इसके, there आई टोटली अग्री, बट आपको अपनी बात रखनी होती है कि आप कैसे जीना चाहते हो, एंड यस वी कैन कम इन द मिडल एंड यू नो सी द ग्राउंड कहाँ पे हम साथ चल सकते हैं। ये नहीं होता है कि ओ माय right. गॉड यू नो हमें ये करने नहीं मिल रहा फालतू का डांस, तो मतलब यू नो वी हैव टू बी अवे फ्रॉम देम, और ओ माय गॉड दिस इज नॉट वुमेन फ्रीडम एंड ऑल, ये लोग डाल रहे हैं ये सब कर करके। एंड मैं प्रीति दी, ये देखिए ना, ये आ कहाँ से रहा है। आई विल नॉट नेम द सॉन्ग, प्रॉब्ली यू गाइज कैन गेस। तो उसमें क्या है ना, एक्ट्रेस वो डांस कर रही है और वो ये लाइन है कि सर से पांव तक हुस्न से भरी। तो दिस इज व्हाट दे हैव टू ऑफर। उनके पास ना इंटेलेक्ट है, नॉट दे हैव आइडियाज टू चेंज ह्यूमैनिटी, चेंज सोसाइटी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आई डोंट एग्री टू यू, क्योंकि वो जब गाने आते हैं ना, तब ये जो अभी अभी किटी पार्टी दिखाई थी ना उन्होंने नाचती हुई, ऐसे लोग ब्रेन वॉश होते हैं, फिर ये अपने वीडियोस डालते हैं, ये 10 को और अपनी तरफ करते हैं। इट्स अ चेन। वो फीडिंग ऊपर वाली जो होती है वो ऐसे लोग पकड़ते हैं और फिर ये अपने साथ 10 और को लेकर आते हैं साथ में। no, I'm talking about the ladies in the Bollywood. आई एम 100% अग्री कि इस किटी पार्टी के वीडियो को देख के 50 और लोगों ने सोचा होगा कि ओ माय गॉड हमें भी ऐसी ही पार्टी रखनी चाहिए, कल को हम लोग कितने बोरिंग है। But ये होता है लेडीज को स्पेशली, नहीं बहुत मैम, ज्यादा इश्यूज हैं ये। नहीं तो वो आप देखो ना, वी हैव, पर ऐसा नहीं है कि अभी YouTube है, दैट्स व्हाई आई कुड गेट टू नो कि देयर आर लेडीज ऑन द अदर साइड आल्सो। बट ये तो बहुत पहले से चल रहा होगा। थैंकफुली मेरे घर में ऐसे लोग नहीं थे। दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि नॉट बिकॉज आई एम सेइंग इट, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि बाकी घर में होते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसी मेजॉरिटी फैमिलीज हैं और हमारे पहले के जनरेशन के लोग, बहुत सही दिमाग था उनका कि दे डिडंट गेट इनटू दिस ट्रैप। अदरवाइज ये चीज तो ये पुश कर रहा है ना बॉलीवुड सम वे और द अदर। और मैं प्रीति दी, मैं कह रहा था ये वो जो एक्ट्रेस जो ये गाना गा रही है ना कि सर से पांव तक हुस्न से भरी, तो मैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन इफ यू डोंट अग्री विथ मी कि मैं उस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप ये जो बोल रहे हो ना, ये गाने में जो लाइन बोल रहे हो ना, दिस इज व्हाट यू हैव टू ऑफर। ना आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आप नॉलेज बढ़ा रहे हो, ना आपका कोई साइंस में कंट्रीब्यूशन है। सर यही नॉलेज तो हमें बढ़ाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि दैट्स व्हाट। अब तो अब वो आपके लिए अभी रिजेक्शन शुरू हो गया ना इसी कारण। सर यही एजुकेशन देने के लिए उनको इतने सालों से पैसे मिल रहे हैं। So ये दीदी के पैसे हैं। I don't know, Anshula Kapoor is अभी this आप lady. देख लीजिए सामने, हम लोग लूडो खेल के बड़े हुए हैं, आजकल के गेम देखिए सामने ही देख लो आप। The best part about coming home from brunch, it seems brunch खा के सब कुछ भूल गया लग रहा है। ये गेम प्रियंका दीदी ने शुरू किया था, वो मतलब वो हमारी यूएस वाली बौरानी। वही यूएस वाली बौरानी। मैं बट रचना मैम, I know you don't understand this. I know you have to do that, but why you have to do it on a camera or take a video and post it? What you are getting out of it? मतलब फॉलोअर्स बढ़ेंगे। I felt like puking यार। What is this? Seriously ये क्या चल रहा है? प्रॉब्लम है कि उनको यूथ को आगे लाना है अपने, क्योंकि इसी जब यूथ डालेंगे ये गेम तो बहुत लोगों को लड़कियां देखने को मिलती हैं, बहुत कुछ होता है फिर इंटरनेट। She is sister of Arjun Kapur, Rachna. Oh my God! Okay, this totally explains this. Oh, of course, this explains everything. ये भी जब से पतली हुई हैं तब से ये पगला गई हैं। पहले तो इनको कभी आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा। ओके। अब ये पगला ही घूमती रहती है पूरे टाइम। भाई की दवा इनको भी असर करती है। What is raising arms in the air like you are victorious? What did you achieve basically? This is laughable, Rachna ma'am. Very. मुझे तो शर्म आती है इनके मॉम डैड्स पे। इनके डैड देखते नहीं है क्या ये सब?
इनको शायद एक सेकंड ओके सो ये तो दिस लैंग्वेज इज सो आउट ऑफ कंट्रोल बट आई जस्ट वांट टू शो यू डायरेक्ट बिलो द बेल्ट इफ यू वांट टू हिट हाउ टू हिट ठीक है आयुष आयुष प्लीज यू आर वेलकम टू स्पीक समथिंग यू हैवंट स्पोकन इन अ व्हाइल आयुष फ्रीज हो गया लगता है वीडियोस देख के आज आई नो ही इज लाइक क्या क्या देखना पड़ रहा है यार सलमान खान का रियल सही बात है पतला है हाँ? सही बात है क्या क्या देखना पड़ रहा है स्ट्रीट फूड का वड़ा पाव हाँ सलमान खान का है रियल नहीं वो टकला है यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है देखता स्ट्रीट फूड का वड़ा पाव व्हाट प्रणव कुमार जी उसका क्या रियल है क्या फेक है मालूम नहीं है मेरे को सब कुछ पे डाउट है ओके सो यहाँ पे देखते हैं अनदर वोक महिला आप इज्जत कर रही हैं आपकी तो चढ़ी गया और तुम guys sorry this audio has some really crazy bad words आपकी तो चढ़ी गया और तुम बेंचो दे इज्जत करते हो लड़की उठाएगी है 3 साल का पुराना केस है और तू बोलेगा ये बोलेगा मेरे को मार चोट इसको so it seems all these words will get the YouTube video removed which I don't care let it be we have to find out the reality of this loser ladies शांति में रहती हूँ शांति में जाती हूँ तुम लोग को लगता है ना कि टट्टे साले बड़े हो गए हैं यहाँ पे बैंक जो तो सिक्योरिटी लग के साले की सारे सबकी लंच काट के मुंह में खिला दूंगी मोह तड़ी के This shit doesn't work. साले खाल छोड़ दूंगी इस माँ के चौके में इस हराम बढ़ती कर रहा है मैं कितने बिहारी है यार this is the most saddest part of the whole video बिहारी को यहाँ से निकालो ये है वुमेन एम्पावरमेंट जो वो खड़ा कर रहे हैं ये है ये मैम जो इन्होंने जहाँ का जिस स्टेट का नाम लिया ना आई एम फ्रॉम दैट स्टेट अनफॉर्चुनेटली नहीं और ऐसा नहीं है सर कि वो आदमी लोग उसे बता नहीं सकते हैं लेकिन क्या होता है ना नौकरी जब प्यारी होती है इंसान का ब्रेड बटर होता है ना तो आदमी सुन लेता है लेकिन इनको लगता है कि ये लोग जो अपने खुद के घर में अपने एक हाथ से एक ग्लास नहीं उठा पाते हैं नौकरों के ऊपर जीते हैं ये उन्हें अपनी दादागिरी दिखाते हैं अपने पैसे की ये ऐसे लोग हैं जो एक ग्लास ना उठा पाए अगर ये कल को चले जाएं सारे आजू बाजू के हेल्पर्स तो दीदी मेरा थोड़ा सा ना 30 लेडीज सी 30-year-old लेडीज का इतना व्हाट कैन बी सो लाइक हाउ मच एंगर कैन यू बी होल्डिंग कि इतना इस टाइप का बिहेवियर यू कैन हैव इन पब्लिक दैट इज द थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये पैसे की अकड़ है एंगर नहीं है पैसे की अकड़ कि हम कितने सुपीरियर हैं तुमसे और हम तुम्हें मार सकते हैं जापट ये आजकल का वुमेन एम्पावरमेंट है जो वो फीड कर रहे हैं ये एक वर्जन है प्रीति दी बट रचना मैम आई हैव अनदर टेक ऑन दिस एक्चुअली I mean, if you consult a psychiatrist or a doctor, there is a reason why alcoholic person becomes rude or is violent. So ये एक तो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है मैडम दूसरी बात है कि जब इनका नशा उतरा था आई सॉ हर पिक देयर वाज नो रिग्रेट और रिमोर्स ऑन हर फेस इनफैक्ट शी वाज मोर एरोगेंट देन बिफोर तो उसका एक कारण मैम ये है ना कि इनको ये फीड किया गया है कि हमको जो है वो आदमियों की लड़कों की बराबरी करनी है बराबरी कैसे करेंगे बराबरी अच्छाई में नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे कि सिंस जनरली गर्ल्स डोंट ड्रिंक सो लेट्स बॉयज आल्सो गेट सोबर ऑल द टाइम वी शुड मेक देम क्विक
बट इंस्टेड ये है कि दे आर ऑन टू द अदर पाथ कि नहीं हम भी लड़कों जैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनके जैसे ही हम दारू पी के बदतमीजी करेंगे. एंड यू नो मैम व्हाट इज द आइसिंग ऑन द केक, देयर आर फेमिनिस्ट सपोर्टिंग हर सेइंग कि हाँ लड़की है इसलिए देखो लोग कह रहे हैं, अभी लड़के ने बदतमीजी की होती कोई कुछ नहीं कहता. सो एक्चुअली यू वांट इक्वलिटी इन दैट, जो भी घटिया काम लड़के करते हैं सपोजिटली वो सब आपको करने, तभी आपकी एम्पावरमेंट आएगी. करेक्ट, ये है प्रॉब्लम मैम. And it's not just one state, one place, one problem. This is seems to be a problem. Like if I just see Bhavya Roy ka video, there are so many women who are manhandling men, and like I don't know, is this like a pattern? मतलब Domino's का कोई delivery guy देर से आ गया, कोई ऑटो से ऐसे ही गलती से टकरा दिया, कुछ भी. And of course ये रिया चक्रवर्ती वो मैडम तो आएगी अपने videos में. But yeah, how can you be doing this kind of stuff in public? It's just so shameful. Yes, ma'am, and men are equally to blame for this because they tolerate, not only tolerate, they encourage that kind of behavior. सलमान खान का मूवी किसी का भाई किसी की जान, तो शिवम जी उसका इतना बढ़ गया था बाल, तो मेरे को समझ में नहीं आया, उसको पर्दे की तरह हटा के I wanted to see his ugly face, but I was यार रचना कौन बात करता है इस तरह से, जिस तरह से वो एक्शन कर रही है, कौन बात करता है इस तरह से? What is this? It was, I was like, I couldn't even sleep that night. It's just disgusting. Ma'am, what I feel, मैम व्हाट आई फील ना कि सम और द अदर गाय कभी इसने ऐसा कुछ किया होगा कांड, ये जो भाव्या रॉय जो भी मैडम है, आई थिंक यही नाम है इनका, तो कुछ ऐसा छोटा मोटा इन्होंने कांड किया होगा और इनके दोस्तों ने शाबाशी दी होगी, ये देखो झांसी की रानी है, ये शेरनी है बिल्कुल. तो ये लड़कों इन्होंने उनको डिनाउंस करने की बजाय कि यार हाउ कम यू बिहेव लाइक दैट भाव्या, ऐसा नहीं करना चाहिए यार तुमको, यू शुड बिहेव प्रॉपर्ली ना, जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल. ऐसा नहीं है कि समबडी इज अंडरमाइनिंग यू. एंड मैम आई टेल यू, ये जमाना चला गया. Those days are gone where women were considered inferior. I mean, to large extent, that thinking is gone. I'll tell you, especially in the north, I'm saying, because even in the small cities, towns, I see a lot of ladies and girls coming out, and they do whatever. I mean, they can do. They can chase they can do their profession. They can chase their dreams. सो इट्स नॉट कि सोसाइटी में ऐसा एक क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस नहीं आया कि नहीं women should sit at home only. So this change is evident, but this change with the video you just showed that is unacceptable, ma'am, and that is detrimental to society also. It's very very sad here. तो यहाँ पे I just want to highlight how women must be embracing their curves. Okay, and I actually absolutely was horrified the first time I saw this ad, because it is actually setting a dangerous precision. Of course it is your body, of course you can eat whatever you want, of course you can be 200 kilos and it is your life, it is everything, but it is actually a problem of health, nothing else. It's not a impinging on your freedom of rights. ये देखते हैं एक बार how the narrative is helping. Yes sir. Rashna ma'am, just a point before that. Yeah, again I'll find a Bollywood link. There was a Sonakshi Sinha movie. I don't remember the movie name, but in that she's like beating every guy or girl, guys particularly, whosoever is coming in her way, and those guys were obviously shown as bad guys, or they had ill intention. And Sonakshi Sinha single-handedly beat all of them. So she had some superpowers in her, but no way, they denounced that. These abhi ek jo incidents ho rahe na, no way Bollywood is coming up and saying ki yaar let's stop this here. Let's I mean there should not be any violence at all, whether it is from a girl side or the boy side. The cross violence is also deplorable, but unfortunately Bollywood will encash on it, and they're not going to do anything about it, according to me. I know. So many ways here. We have to check what kind of content we are seeing.
So stop shooting yourself. So everybody, all the society will tell us that we should do this, we should do that, and everything it seems. But we should stop shooting ourselves and do whatever we want. So it's Priti, Women And ma'am, empowerment. why you have to dance in your undies, ma'am? No, you I can, don't get. but you cannot promote this and be in media like this. You can do whatever you No, want inside your house. Correct. Absolutely, I agree, ma'am. The reason Problem I'm is saying to because I see it promote on this screen. in a way, you know. Problem It is is No, I promotion. also dance in my home. I also dance in my undies, but I can't take a video and post it That's what I'm online, right? saying. It's not about video. Yeah, It's Ravi, about visuals feeding mil your gaye mere ko. mind. It's about feeding your mind that you can do this. If you are not, if somebody is stopping you, फिर उनका problems है. ये नहीं feed ma'am, not only you can do this, you should do this. That's what the Yeah. message is, I think. वो तो है ना, वो वही तो बात है पूरा कि पूरा बॉडी में आ जाओ खुल के बिंदास. And another problem is they promote all these things saying as a Western culture, and I hate that part. Western culture उनका लाइफ ही वैसा है, जी तो फर्क नहीं पड़ता उनको, you know, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसे ही चलती है हमेशा से. ये वेस्टर्न कल्चर बोल बोल के इसको बर्बादी की तरफ लेते हैं इन लोग ऐसे. Okay, so एक सेकंड, लेट मी. बंगाल में एक वामपंथी लड़की सैलून के दुकान पर गई और दाढ़ी बनवाकर इस बात का संदेश दिया कि महिला पुरुष से बराबर. Oh, you can see this in Sonam Kapoor Insta also. She also do that, all the face hair out before makeup. Oh, come on. Ma'am, I heard. I mean, this is not in India. This is in the West. This left wing is actually pushing this theory, na, that men can have their peas also. That monthly cycle, na. मेरे को मालूम नहीं है बात, मुझे बख्श दो. I don't know that information. No, ma'am, but I can confirm I don't have actually. हम रॉकी जी अभी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट से ना गे और एल पे ही आए हैं. अभी हम लोग इतना उन्नति पे नहीं है. अभी मेंस राइट्स मैटर भी आ जाएगा. अभी स्लो आ रहे. पहले इसको तो फिनिश होने दीजिए. अभी तो सिर्फ हाथ रखा है कंधे पे. अभी फूल आने बाकी है. Oh my god. So this is the viral video that is going. So I make dosas. I can make 20 dosas in 5 minutes, okay? But ये दीदी को $200 वाला एक डोसा Evo Chef. So this is how पता नहीं कितने सारे बटन से प्रेस करके परेशान हो रही है दीदी. बट बताओ, डोसा भी ये नहीं बनाएंगे तो ये पूरे दिन किटी पार्टी में नाचेंगे तो और क्या करेंगे? नहीं इंस्टाग्राम चेक देखिए, इंस्टाग्राम चेक करिए दीदी. सीरियसली यार, बटन प्रेस करके इंस्टाग्राम पे चले जाओ बस. इसीलिए पूरे दिन इन लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं. काम धंधा है नहीं कुछ, हर जगह बटन ही प्रेस करते रहते हैं. पति का भी बटन ही प्रेस करते होंगे. क्या बात है. This is another level of यार प्रिंटर बना दिया है खाने को भी हमने. bullshit यार, seriously. Brasna ma'am, I think my wife loves making dosa because it's the easiest thing to make. Exactly. That's the whole point. रॉकी जी कर दी ना आपने वही फिर गांव वाली बातें. I know. वुमेन क्या वोट नहीं है. सिर्फ डोसा बनाने के लिए पैदा हुई है. वही तो बोल रहे हैं उन लोग. सही बात है मैम. एक तो मैं बिहारी भी हूँ, ऊपर से गांव वाला भी हूँ. सही कह रही हैं आप. I'm sorry रॉकी जी. My husband is also. No.
I'm joking. Sorry. Girija ji, there's so much to emulate in the Western culture, active response in public, civil awareness. Exactly. Thank you, Girija ji. You brought out the golden point here. If you really want to emulate, पहले कचरा बाहर फेंकना बंद करो, ठीक है? Civic responsibility. Of course, personal lives are all like not that great यहाँ पे public का, but the public and the civic responsibilities that they show up with is amazing. So at least can we just take out the best out of the whole kachra that we see on? That's amazing. Thank you, Girija ji. So here the moms are going a step further. I was just shocked and appalled by this video, Priti. And matlab, just sad and I've seen this one. What is this? It's an infant. मेरे पास में जवाब ही नहीं होते आजकल वीडियोस के लिए. They're getting a child's eyebrows done. Mom, dad सब पागल हो चुके हैं आजकल के, मुझे लग रहा है. How dare she does this to a child? I And mean, why to do this? Why? what are you giving an impression कि you're just not इसमें good क्या the way you जरूरी are? है? उनको किसने बोला है कि वो स्कूल नहीं जा सकते वैसे? कि किसी या तो सोशल मीडिया पे होगी कहीं बच्ची, या किसी प्रोग्राम वगैरह में होगी जहाँ वो इतना टिप टॉप लगाने में लगी पड़ी है उसे. बट रियली यार, लाइक हेड्स ऑफ है पेरेंट्स आजकल के. मैम आई डोंट थिंक सही पॉइंट आप लोग रेज कर रहे हो, और मेरे को लगता है कि there is a rat race going on कि right from that childhood ये कि you should look hot and you should appeal to people in a certain way. I don't know what's going on because अभी गणपति फेस्टिवल में ना I saw the video you showed ना काला चश्मा वाला, जो another video going rounds is that a bunch of women or they were men also, वो उन्होंने गणपति जी को, गणेश भगवान को प्रणाम किया. And then they started that, that stupid thing. I don't like that. It's dance actually. One person gets into the middle and then shake their stomach or ass. I don't know, whatever. And then the whole dance crew, jumps in. I don't know ki the Ganpati Puja mein you should do bhajan, aarti, things like that. There are maybe in marriages you can do like that, right? Yeah. But anyway, kahin bhi, there's a certain decorum. I mean, you go to a place, you follow the decorum there, you talk in a way, like in a library, you don't shout. Like in a puja, you do puja and whatever that archana or that aarti that you do. So there are certain things that are bound to certain acts you do in public or whether in private or public. But ऐसा कि कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं आप, क्या वोकिज्म बोलेंगे, इडियोक्रेसी बोलेंगे, पता नहीं क्या इनका. I don't know, man. Really don't have ये सब इसलिए है क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ हम लोग ये टॉपिक रेज नहीं करते कि ये ऐसे गानों पे डांस नहीं होगा या ऐसे परफॉर्मेंसेस को फेस्टिवल पे अलाउ नहीं किया जाएगा. ये रेज होता ही नहीं है सोसाइटीज में. जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हम लोग हाँ में हाँ मिला लेते हैं बिकॉज बाकी के 6 लोग ये बोल रहे होते हैं. बट वी इवन इफ इट्स अ वन पर्सन, दे हैव टू स्टैंड ऑन दिस कि गणपति के ऐसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे गणपति के गाने हैं, करो ना डांस, लेकिन उस पर हाई मिर्ची पे सॉन्ग करने का, डांस करने का जरूरत नहीं गणपति पे. एंड सेम थिंग विद नवरात्रि यार. हम लोग छोटे छोटे थे, नवरात्रि में बहुत अच्छे गाने आते थे, इवन फाल्गुनी पार्टी के बहुत अच्छे गाने आते थे. बट ये जो अब गाने आने लगे हैं ना मूवीज के, आई जस्ट डोंट लाइक दीज थिंग्स कि वो नवरात्रि तो रही नहीं है, उसको पूरा कमर्शियलाइज बना दिया इन लोगों ने. So the girl, and vulgar dances are also in there. Yeah. No, sorry. No, I just wanted to say that girl whose eyebrows are getting done when she's 1 year old will grow up to become like this lady who's Kylie Kardashian. So Kylie actually apparently goes to this red carpet event, and wahan pe she posts a video. So this is what the paparazzi takes, and she posts this on her Instagram, where she has actually cinched her, क्या बोलते हैं, small of the back. This is, I don't know in Hindi what they call, but इनका कमर का जो भी है, she actually reduces the size of this and posts. And everybody is like, they shame her, they publicly shame her and everything. But the point is she's just not happy with the way she looks, because
look at that. Such a gorgeous, used to be such a gorgeous lady, but she has like 25,000 plastic fillers in her body right now. And she's still not happy with the way she looks. She has to go and edit even those things and post. So that is the kind of bad things that we are going to do to our children's psyche. My Yeah. God, Jasna ma'am, I'm still trying to figure out what's the difference. But thankfully, thanks, you put it there rightly. And what about that hair color? That looks very ugly, ma'am. Black color or blonde, the natural color looks beautiful on the person. Why this purple? What this purple color is doing actually? Yeah. Rocky ji, Yeah. at the end it's all business. At the end, promoting all kind of products so that young girls can do all these things. At the end ये सब business है, क्योंकि ये लोग जब तक करेंगे नहीं तब तक यंग लड़कियां जो इनको फॉलो करती हैं 2-2, 3-3 मिलियन वाली, वो ये सब नहीं करेंगी तो उनका वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? दिस इज व्हाट इट इज. यही ब्यूटी तो इंडस्ट्री फॉलोइंग बंद करवानी है मैम. क्या है? यही है. नहीं That's होगा. what मैम That is the problem ये that we are fighting right now. And Preeti, to yeah your ma'am, point, we need warriors. Preeti, to your point, Bechna, right? So they actually sell tea, which is not FDA approved or USDA approved, saying that this is it will treat all your medical conditions and all kinds of वो dip चाय वाला जो रहता है ना. वो तो वही तो मैं बोल रही हूँ. एट द एंड ये लोग जो भी कुछ करते हैं ना, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जो भी हो, टॉली हो, मॉली हो, ये लोग जो कुछ भी बेचते हैं या करते हैं ना, या आपके सामने जब रेड कार्पेट से आते हैं, ये सब ये बेचने का वे है. अब वो चाहे गाउन हो, फ्रंट स्लिट का तरीका हो, कि आजकल का ये फैशन ट्रेंड है, बाल हो, बोटॉक्स हो, चर्बी हो, जीरो साइज हो, एनीथिंग यू नेम इट, सब कुछ प्रोडक्ट है उनके लिए. क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, वो ये करेंगे उनको देख के. तभी तो आप कह रहे हो ना कि शादी में आप गांव वाले लग रहे थे और बाकी सब फैंसी लग रहे थे, क्योंकि यही सब तो लोग हैं जो फॉलो करते हैं इनको. वो ट्रेडिशनल टाइम कहाँ रहा जब औरतें लेडीज साड़ी पहना करती थी. वो आजकल तो सब सरारा गरारा चरारा पे आ चुके हैं. कोई मतलब नहीं कि आपके ट्रेडिशन में पहना जाता है कि नहीं. मैंने चूड़ा पहनना है, भले ही वो मेरे सिस्टम में हो ना हो, सबने लाल चूड़ा पहनना है शादी में. ये क्या पागलपन है. आपके कल्चर में पहना जाता है तो पहनो, नहीं तो आपके कल्चर में क्या पहना जाता है उसको रिस्पेक्ट करो. नहीं, सबने लाल चूड़ा पहनना है आजकल फैशन में. क्या पागलपन है. प्रीति दी और रचना मैम, अनदर थोड़ा सा आई एम digressing, but since you Preeti दी mentioned about they do such stupid things so that the products can, like the multi-million dollar companies can sell their products, and people should start using them, though I mean they may look stupid, but they have to use it because their stars are using it. But एक जगह पे मैम I don't get कि ऐसा क्यों करते हैं कि वो जो ये है, मतलब आई बीन फाइटिंग दिस ऑन सोशल मीडिया आल्सो. देयर आर अ वेरी फ्यू सेक्शन ऑफ लेडीज पर्टिकुलरली हु हैव अ प्रॉब्लम कि यार सैनिटरी पैड्स को न्यूज़पेपर में रोल करके शॉपकीपर क्यों देता है, उसको ऐसे ही देना चाहिए. मतलब इट्स नॉट अ थिंग दैट लेडीज शुड बी ashamed of and they should hide it. I tell what trap. Everything they want to pick up a fight here. Everything they want to pick up a fight, and everything is they have to run their agenda of feminism. That is the problem. Feminism can. I don't know what's their motive behind that, but I have a point here, ma'am. See, I don't. I mean, I'm not saying that this should be done or that should be done, but there could be some woman who would not like that, giving it the open. She would like to get it wrapped in a newspaper. So it's up to a personal choice. Why these ladies are trying to make a point here that to become a liberated woman, you have to do certain things only, and then only you will be called a liberated. Actually, you would be a liberated woman. Modesty. Yeah, modesty का तो नाम ही नहीं है अभी. It's just how much ever you are out in the open, you live freely. That is, yeah. एक होता है but ma'am, I'll tell you what you should. एक होता है इंटरटेनमेंट वे से एक्सप्लेन करना. मैंने ये बहुत बार पहले भी कहा है कि एजुकेशनल वे में सबकी अपनी पर्सनालिटी है. कुछ लोग शाय होते हैं, उनको उस तरह से बिहेव करना होता है. कुछ लोग काफी ओपन अप होते हैं चीजों में, तो दे आर ओके विद द ओपन थिंग्स आल्सो, दैट इज एक्सेप्टेबल. एक होता है, ये होता है एजुकेशनल वे. एक होता है इंटरटेनमेंट वे. जिस तरह से आजकल गे और एल का दिखाने लगे हैं चीजें, लेस्बियंस वगैरह के, दे आर इंटरटेनिंग नाउ.
and promoting this. हाँ आओ आओ सब उठ के आओ, और तुम सोचो जरा, शायद तुमने 20 साल की शादी में सोचा ना हो, शायद तुम दूसरे तरह के थे। ये सब है ना, ये एंटरटेनमेंट चालू कर दिया हमने। एक होता है एजुकेशनल तरीके से करना, जो इंडिया में अभी भी थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन है इस लेवल पे। हाँ आप करो उसको promote, every storyline is making free choices and cheating on your partner. Every storyline. I'm like, कुछ और है? Do you want to convey any other lesson? नहीं मैम, but no, I find this notorious, ma'am, because this somehow challenges the modesty of some women would not find it appropriate. So my take is, growing as a I at a certain age only I came to know that this actually is the biology and this is how things are. Earlier than that, मेरी everybody have a personality. हर आदमी shirtless तो नहीं घूम सकता ना, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बंद करना पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आदमी नहीं रहा, सबकी अपनी चॉइस। तो मैम शर्ट, हाँ बट मैम शर्ट खोल के क्यों घूमना? यू वुड थिंक कि एक आदमी वो शर्ट खोल के घूम रहा है, तो you would think, you would not think, I mean एक पहला इंप्रेशन तो गलत आएगा ना। बट अगेन यू नो एट द एंड सबकी अपनी चॉइस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को जज करते फिरें और या मोटिवेट करें कि नहीं तू ऐसे नहीं खोल रहा है, ओ माय गॉड यू आर सो डाउनवर्ड। नो, अपनी हाँ राइट, आई गॉट योर पॉइंट। बट मैम प्रीति दी, मैं आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर कि यू शुड चूज योर priorities carefully. If you really want to do something for menstruating women, अभी भी इंडिया में ऐसी sections, ऐसे गांव, ऐसे remote areas मिल जाएंगे जहाँ पे women don't, I mean they are still deprived of hygiene. So you should go there and you know, talk to people about it and make them aware about it. That should be the priority. यार एक शायद हमारे मतलब the concept was to give rest to menstruating woman because उनका aura तभी अलग होता है और she needs rest also because she's in immense pain at that period of time. So that has turned out to be in a way that she's impure. So वो एक मेंटेलिटी शायद चेंज करने की जरूरत, उस रिगार्ड में काम करना चाहिए, ना कि ये चीज उठाना कि यार रैपर में वो न्यूज़पेपर में क्यों रैप करके दे रहा है, दिस इज नॉट गुड। ऋतुविद्या, तो ये एक ऋतुविद्या करके there is this lady who wrote a book called where she debunks a lot of ऋतुविद्या, where is that lady's name? Okay, Sinu Joseph. So this lady, I highly recommend you to watch this, especially women, if you are interested in all the things that temple mat jao, rest karo, and all those things were actually done because of biological reasons. It's not andhvishwas or anything. And we don't know all these things, right? And people just because they want to make an argument, they make an argument and do bullshit. But there are actually science behind all these menstruation practices, and it's an amazing book. I highly recommend it, ऋतुविद्या करके. So, but right man. वो जनता को क्या बोलेंगे यार? But नहीं, so Rocky ji, because you picked up the topic of shirtlessness, I thought कि some people don't know why they go around shirtless. Although we want some people to go around shirtless, some people zabardasti they go. So that is another story. But okay. No, that's a part of there are occasions, man. अभी ऐसे आप मॉल में जाएंगे तो people would laugh at you, no matter if you have body like Sushant also. I mean, maybe for the photo shoot or maybe for the glamorous purposes. I mean, you want to advertise a bathing soap, so there could be occasion. I don't have a problem of being shirtless. But if some man comes and tells me that, oh, if you don't go shirtless on street, you are a coward man or you are not man enough, then I have a problem there. Right? Exactly. Girija ji, yeah, Sinu Joseph, yes, she actually is amazing. She does a lot of, but I did not know this about Sonali Phogat, Girija ji. It's just so sad, but yeah, people taking advantage of her. And women are growing up to not have good self-esteem about themselves and what they are capable of and everything. So, but did all the women learn a lesson from that? No, they are still on the videos, doing Insta videos, doing faltu ka dance. They don't learn a lesson at all. They don't care. Exactly. This is what happened when you throw videos in public and so many people watching you. So I'll just show you this video of TMI. But Priti, I have a point. Sorry, Rasna, I've been speaking a lot, I know.
but the thoughts keep coming to my mind. No. Okay, so I'll tell you, ma'am. The left-leaning women or the women who thinks that the women should behave according to them to feel like liberated, or to have a liberated status. You guys, people like you have punctured in their cause big time, and that's where the men could not have voiced their opinion, because easily we can brush with that patriarchal mindset. You don't like a woman, that's why you are saying that. But since Yeah. you guys are saying it, I mean, it has punctured their cause big time, and that's why I'll tell you the truth. They hate you a lot, the feminists. Exactly. Exactly. Chappal मारने के लिए ready हो जाएंगे, but who cares? It is the reality, and I want to. If I have been given a voice, and if I'm not saying it like how it is, what's the point, right? Thank Yes, you, ma'am. sir. You're on the dharma side, ma'am. More power to you. Appreciate that, sir. Thank you. So यहाँ पे so people like this Kim Kardashian, who have an unreasonable amount of fat in the back, injected like probably 10 different doctors and 10 different settings and whatever, this unusual bullshit that they keep spreading around. The problem is and the kind of commentary that she gives. Okay, so let's see. We would wear uniform, so I'd wear this little skirt. I would flip up the skirt and write all of the answers in like washable ink. And what is the teacher going to do? Ask you to lift up your skirt? Like sexual harassment. I used to cheat on all of my tests. We would wear uniform, so I'd wear this little skirt. I would flip up the skirt and write all of the answers in like washable ink. And what is the teacher going to do? Ask you to lift up your skirt? Like sexual harassment. I used to cheat on. So now we can expect our girls also to start doing this. Is that what it is? So just horrified by some of the things these people are just showcasing here. But yeah, so let me just quickly do a few things here. Just wanted to show you there is something called the Gems of Southwood that has come up. Although how many ever links I put a save of him, he keeps on deleting his tweets, so it has become a little annoying. But this guy is doing some research. Gems of Southwood. So this guy has posted these kind of pictures. I just wanted to show you. So Ganapati Papa Moria, though they are, so it should be the other way around, right? We are looking up to gods, but no, we are actually humanizing and making ये पुष्पा का वो चड्डी बनियान पहना के gods are looking up to heroes. Yeah, exactly. It's just so sad, and I don't know if this is some kind of movie. Let's see. And this is the famous thingy that Pushpa ka, it seems this is Pushpa Ganesh. So this is just some. So RRR, I think this is, look at that. Yeah, that RRR actor, I mean, the Ramcharan Teja. So this character is actually inspired by Bhagwan Ramchandra. Why Ganesha is getting inspiration from this RRR character, man? Yeah, Hindi में कहते हैं उल्टी गंगा बहाना. I know. And Dekhe. The worst CGI effect thing where all the animals are going and attacking all the Angrez public. It's just. We saw that in. Yeah. Okay. I didn't see the movie because of Alia only, man. I have not seen RRR. I think. I can't even see Telugu. I have my own reasons. I just want to keep working on that also. But itna Bollywood ka tatti hai na ki we just can't. No time to focus on that. Anuji, no sir, I haven't watched Kartikeya too. No sir, unfortunately I don't have any plans yet. Exactly. Giryaji, bang on again. On the one hand, women scream not to treat them as sex objects. On the other hand, they do everything to project themselves as arm candy. Yes, ma'am. I have a point here. So that's what I was trying to make. So our grannies, those age women had very
I mean, in detail, they had idea about sexuality, how male sexuality works and how female sexuality works. So it's not like both are equal, ma'am. And I'm so proud to connect to that generation. They find a lot of difference, and that's how they have a to-do list for both boys and both girls. That's separate thing. You know, if a lot of skin is shown from girl side to the boy side, it will trigger some kind of, some hormonal kick in the Yeah. No, boy's absolutely. mind, Yeah. man. That's Yeah. how the biology works. If you are, this feminist talk about that monthly cycle, that you should listen, and you should understand female psychology, female's biology, but nobody is talking about male's biology. This is how the God has gifted us, and it works in a certain way. Now it's up to a man, and that training should be given to every boy, that you should have a control on your urges and attraction. That's a separate story. But if that that's showing of the skin See, doesn't the trigger a onus. hormonal kick in the boy, then Yeah, there's a problem, man. that is that is if you're interested, you can the threshold of the kind of pornographic videos that children these days are getting introduced to pornographic videos at 10 thanks to the internet. Okay, the prop also, that is another topic. If you're interested, you'll have to research on what is happening. Is the threshold of what excites a man and a woman right now has changed, because उसको कुछ भी देखने से भी एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है. मतलब there is some research on that being done, because you look at some unrealistic body types on these illegal websites, and then you look at real Right. people in the real world, and you're like, you're not able to juxtapose between those two things and Absolutely. reconcile in your mind. So that is Absolutely, absolutely agree, and sad byproduct. that's how it's ruining the relation. I mean, the relationship between a husband and a wife has so many shades or so many aspects. So the aspect that you highlighted on just now, that is being ruined, particularly by this, this show industry. You call it the cinema, or you call it the other extreme of, as we said, pornography. So that aspect is ruining that part. That is also, a concern between that could be a reason why there are a lot of clashes between the couple. So I mean, these are topics are all people should do research on it or survey on it. That's right, man. Yeah, no, thank you. Yeah, so Anuji, it's glad you're able to watch it and you like it. I just don't know, Anuji. I just don't want to watch it and find out later that it was some kind of a producer or a director or something, nepotism or something. I'm really freaked out, even though it might not have any of those ingredients. I just want to Anupam Kher, pata nahi wo either udhar ka, I'm not able to understand where he stands, so a lot of questions, so I'm just trying to avoid it right now. Right, ma'am. And after I see Karan Johar going to the south in open, you don't know how many people are traveling from Bollywood, traveling down south behind the scene. We don't know, right? So even I admire Priyanka Singh a lot. She's the sister of late Sushant Singh, and she actually, ma'am, her talks actually has a lot of substance, and I can connect to her so nicely. Even my and her views are very coherent. So she's into she advised to people that let's stop all kind of entertainment for some time. Let's all this get purified, and let's work on ourselves to build ourselves and society and country as a whole. So that ma'am actually appealed me a lot, and she made a lot of sense when she spoke like that. And that's a long way. You have so many things. If you start thinking about it, ma'am, you will absolutely find it confusing. Where do I start from? There are so many problems, so many issues with oneself, and then on to others. Pehle we have to check what we have been doing for entertainment till now, right? And how to remove all those things from our life, and then look for we have so much of work, as you said, we have to flush out all the ideas of entertainment till now that we had. So right, ma'am. And also I've stopped watching cricket after this IPL BS came into the scene. I was horrified to know what happens in these IPL parties. I mean, party in general, in the kind of parties they do,
And that's why I admire the greats like Sachin Tendulkar and Rahul Dravid. They were not seen in these parties when they were still playing. So that's why I admire them a lot. And cricket used to be a sport back then. Now it's a showbiz. So anyway, ma'am, I mean, I'm away from all kind of entertainment, ma'am. I just hope everybody focuses on themselves, build themselves, Yeah, and we have to at you know. least for And thank you for set expectations. Yeah. yes, and thank you for that video that you shared some time back. Yeah. And I don't know, it's either the YouTubers or influencers have picked up from your video or if they have got it from their own. That that कुछ कुछ होता है वाला जो part था ना कि when Karan Johar is that stupid thing that they made, that roast, and Karan Johar is on the center, and you know Yeah. these two people are on the side. So that part which you had Yeah. posted in some of the video, Yeah, that is yeah. going around in social media. So I would, Yeah. I hope so so. Thank you know, the caption you had put there, that do remember this before going to watch their next movie. So that's I mean, that's so powerful, man. And you know, that's how, you know, your karma, the things that you do becomes very powerful when you have the right intent also. Yeah. So that's how, I mean, that's how it is so much power. I mean, that is making sense to a lot of people. And now you may have got the news that these duo have been stopped from getting into the Mahakal temple in Jan. Exactly. It is So literally like this is Shiva did that for himself because he did not want any kind of, you know, things around him that he was not happy with. I think that is just divine justice for me. That's what I feel. yeah, and that's a kind of signal to them also that please get purified and come next time. Like last, So exactly. you never. Yeah. No, Shiva is all, you know, is all divine and he'll not discriminate, but he definitely wants them to, you know, improve. But sadly, the kind of arrogance they have, it's not, it doesn't look possible. Just to add to the arrogance, ma'am, I think sometime back, that auntie you had showed, no? That auntie which told that because of me, the railway revenue went up. Revenue wali, हाँ. So actually, I had gone to a place where they had shot that Ashoka movie. You remember that the song was there, na? So I went. I had visited that place where that movie was shot. You know, that's a tourist place in India, basically. So people told the stories, the kind of arrogance that was in 2001, right? So the arrogance is actually because of the legacy that they have. That, do you know whose granddaughter I am? I'm the granddaughter of so and such and such personality. So this arrogance is you know, all over themselves. So the locals there, they actually told me, you know, she ate breakfast in a steel thali or a brass thali, and that she threw it away like it's a piece of garbage. So, I mean, this was just a kind of a gesture. There were many others. So I just wanted to highlight that, you know, their lifestyle is not that what we used to think. They are very arrogant in their personal life, and they're, I mean, they should never be, you know, copied or made idol. We have our life of our own. I think, ma'am, personally, we are far better human beings than them. And we should not lose it. Just you know, in the pursuit of becoming them, we should not let We should find lose out our ourselves to. Astitva. Yeah, we should reconnect to our Astitva once again. Absolutely. Right, ma'am. Another great session, ma'am. I'll take your leave now. Keep rocking, as I said. Thank you. Okay, and keep coming. And ma'am, can you drop your Twitter ID in the personal chat? I would like to follow you on Twitter. Thank you, sir. I'm not. I only go there for some content, but you can DM me if you are interested. But I'm not active. Okay. There. You know what they say, right? You have to be off Twitter to do great things, to be a rock star on Twitter. So I strongly believe that. Right. Your words are golden, ma'am. Thank you. मेरा फोन इतना गर्म हो गया था, नोरा फतेही की पिक्चर दिखानी पड़ी, तब जाके ठंडा हुआ. नहीं, एक सेकंड. किसकी बात कर रही हैं? मेरा फोन गर्म हो गया था, मैंने कहा नोरा की पिक्चर दिखानी पड़ी, तब जाके ठंडा हुआ. Right.
अश्विनी Okay, जी अब Preeti वुमेन di, एम्पावरमेंट की thank बात you so करके much. मेरा फोन भी नहीं सुन रहा मेरी। नहीं प्रीति प्रीति Okay, ma'am. Both of you wonderful ladies, please take care and थैंक please यू do come. Please raise your voice. This is a battle, ma'am, and we are in between it. There's no question of letting our guard down. So thank you again, both of you, and थैंक यू more power to you both. थैंक यू। अश्विनी जी उस 2013 में मातृ की बिजली का मंडला मटरू की बिजली का मंडोला सोनू की 2018 में टीटू, सोनू की टीटू की स्वीटी, रामू के चाचा की बुआ के बेटे की दुल्हन हम ले जाएंगे। 2050 में ऐसे भी मूवीज आएंगे। अभी तो फाइट कर रहे हैं ना यार अश्विनी जी, तब तक झेलना पड़ेगा क्या इनको? रामू के चाचा की बुआ की बेटी की दुल्हन हम ले जाएंगे। प्रिंस, हेलो, हाउ आर यू सर? Is this the Filmfare Award अभी वाला? या दीदी को इट सीम्स सिंपली द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट इट सीम्स ये बंदा। वो दीपी कह सकती हैं ऐसे। Big Boss 6 started in Telugu, was watching that. Prince, अरे यार, Big Boss. Okay, उनका भी करेंगे एक बार। Okay, so here, let's see. So Alia Didi बोलती है, okay, so let's get to Brahmastra and wrap it up in a couple of minutes. Just want to show you. Please remember for tomorrow, 7 days to go it seems. ठीक है, this was a snapshot I took last week and 7 days to go. Ticket bookings are now open. Brahmastra releasing, blah blah blah. 128K views, but 5,000 loves. I'm like, तेरे 20 million fans कहाँ गए? वो नीचे कमेंट कर रहे होंगे, वो यार टिकट लेने भाग गए होंगे। 10 घंटे में 791 रीट्वीट्स एंड जो भी इनका हैंडल यूज करता है ना, वेरी वेरी बैड। तो पैसा देके पास हुआ बच्चा है, नो डाउट। एग्जैक्टली। ओके, सो आई जस्ट वांट टू शो यू दीदी आजकल क्या क्या कर रही है। तेलुगु भी सीख ली, ठीक है, तेलुगु सीखना ही नहीं, तेलुगु में गाना भी सीख ली, ठीक है, एक बार देखिए। एंड ये बेबी ऑन बोर्ड ड्रेस सेकंड अनुज 20 million में रचना इज आल्सो नो। ओके, सो यहाँ पे देखिए आलिया सिंगिंग इन तेलुगु इट सीम्स, एंड ये माइकल स्कॉफील्ड, कौन है स्कॉफील्ड रेड्डी, पता नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला बंदा लग रहा है, वो कौन है मालूम नहीं है, बट ये देखते हैं। ఆ బ్రహ్మేనయు చేయడానికే తన ఆస్తి మొత్తానే ఖర్చే పెట్టుంటాడే, అందాల నీ కంటి కాటుకుతో రాసే ఉంటాడే। So तेलुगु में गाना गा रही है, ब्रह्मास्त्र का गाना है it seems, and this is dedicated to all her Telugu fans. నానుదు తీరాటలనే కుంకుమలా నువ్వే చేరగా ప్రియా पति को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पति का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पति लाइक कर लो यार जो भी करना टिकट के लिए। जल्दी जल्दी। ये राजमौली को रोना आ रहा है, बट पब्लिक इवेंट है तो मुझे तो लगता है प्रेगनेंसी भी ब्रह्मास्त्र के लिए प्लान की होगी, ओपनिंग के लिए। है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ। चुप है। Okay, sorry. So let's do this. ये world of NTR fans. She's such a darling and a very good friend of mine, Tarak. One of the finest actors of our generation, Alia. A very, very, very close friend and a darling. And I must say, in fact, everybody who's sitting here, the most emotion I actually share with is with Rajamouli, and next is Nagarjuna Babai. And after this, it's only Alia. The most emotion he shares with after Nagarjuna and Rajamouli is with Alia, it seems. आप ही बता दो, इस जगह का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है।
कितना झूठ कितना सच बोल रहे हैं, आप ही बता दो। नहीं, ये अंकल की राजमौली की इतनी धुलाई हो गई last week when he promoted the Telugu trailer of Brahmastra, saying that why the heck are you promoting Karan Johar's movie on Twitter? उसको troll किया गया भाई साहब, that was amazing. I was like, Telugu people जाग गए. I was just like so happy. But ठीक है, ये हो गया दीदी का. Let's just do a couple of things. I just want to show you. अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे. 2 more days to go. I know. हम लोग अपने ऐसे इतना भर चुके हैं इसको लेके कि ऐसे ऐसे वॉमिट करेंगे ना. Exactly. But it goes Andariki Namaskaram, Bagunara. Andariki Namaskaram, Bagunara means namaste to all of you. How are you doing? ये सब कुछ कोर्स करके आए हैं, सारे आदमी कोर्स करके बस आए एक ही हैं. सेंटेंस बोलते हैं यार ये लोग. अरे जो इजी होगा वही सीख के आएंगे ना. चाहती क्या हो पूरा क्रैश कोर्स कर ले. एक मूवी के लिए इतना बहुत है. I know, and especially for Brahmastra. So TikTok and promos useful, motivating. Yeah, no, but China का कुछ अलग ही एजेंडा है गिरजा जी. I don't know. Popular OTT series is coming. अरे पहले सीजन उनको देखने दे भाई. That's a good one, Ashwini ji. Brahmastra team participated in Cash program. It's a Suma program. Alia Ranveer telecasted on September 10th. Oh wow, okay. Promo of Cash. Is that a new serial or something? On a second. I have to look at it, Prince, but it seems they did a program on ETV, the Telugu TV, by with anchor Suma. Let me just do something. Cash program. Let me just do that. Oh, name कुछ नहीं मिल रहा अभी. Oh wow, okay. So this is a. It seems they also participated in such a thing called Cash. Okay, I'll try to look for that, Prince. Thank you for that information. वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब तेलुगु में तेलुगु पब्लिक का पैसे छीनने के लिए, but नहीं होगा. I hope our folks will not fall for that shit. Okay, ho gaya. Just one more thing. I just want to create caution around this gentleman here. Finally, Preeti, any final comments here? ये क्या है मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन just generally 2 more days to go, guys. Come on, feed as much as you can and then vomit on Friday. Do it. 2 more days. This we have to. Exactly, we have to. Okay, so, Rachna, dear, bye. Thank you, ma'am. Watching. Thank you. Thank you. तुम्हारी लेटेस्ट फ्लॉप का नाम क्या है? तापसी दोबारा मत पूछना. Ashwini ji, you are on a roll. Okay, so last video, guys, just a throw of caution here. There is a channel called Social. Okay, there's a channel called Social, and that guy, look at how he is promoting. ये जॉनर हम अभी तक अच्छे से नहीं बना पाए हैं. सिंस ये एक बॉलीवुड फिल्म है तो ऑब्वियसली इसको कैंसिल करने की कोशिश भी कैंसिल करने की कोशिश हो रही है, इट सीम्स, की जा रही है विद नो सॉलिड रीजंस. सो सोशल का ये भाई साहब ने प्रॉब्ली ट्विटर में कुछ भी पढ़ा नहीं है शायद. नो सॉलिड रीजन की वजह से हम लोग वी आर ट्राइंग टू बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, इट सीम्स. अब जिसको फिल्म देखनी है उसको देखने दो, बाकी जिसको नहीं देखनी है आप चिल करो यार, मत देखो. So he is also very big handle, 2.36 million viewers. So lot of things, guys. I mean, these people are just creating a lot of drama. Only PVR theaters are showing housefuls. Is this something? I think so, Girija ji. A lot of people are talking about that. But let me just play one video to end this, and then we'll talk next week. Thank you, guys. Thank you for being here. I hope. Oops, that is my cat and my dog, but let me just show you this. Thank you for being here.
As always, really appreciate all the time. If you can give anything in the world, that is time, and you are giving it here. Really appreciate that. HPT, thank you for being here. Thank you. Okay, so let's do this. मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम ना इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम मेरी जान भला इस तरह मुझे क्यों सताते हो तुम तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं ये इरादा है मेरा वादा लौट आऊंगा मैं दुनिया से तुझे